Assalamu alaikum. I am here with the first lecture of the economics, and in this start we will want to learn that what is the economics. Actually, economics is the very commonly day-to-day life subject. We want to know that what is the economics and how it evaluated, what is the short history of the economics, how can we define the word economics, and then what are its branches, kinds, types, and then some essential concepts that we're using in the beginning of the economics. So सबसे पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेंटेंस में, एक वेरी स्टार्टिंग सेंटेंस में हम कैसे कह सकते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. ओके, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बात भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए. हम थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करते हैं. Second thing is that how society copes with the problem of the scarcity in the human life. So, problem of the scarcity in human life. And in the first line, we read it, scarce resources of the society. So, we have to take some time to understand that what is the scarcity problem. क्योंकि हम स्टार्टिंग में इस बात को कह रहे हैं कि ये स्केयर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का नाम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द स्केर्सिटी इशू इन आवर लाइफ, इन द ह्यूमन लाइफ. It is basically social science. It's a basically social subject. Basically deals with the humanity issues, the human life problems, and the one and important concept is that the resources are scarce. अगर हम ये कहते हैं कि हमारे resources scarce हैं तो उसको हम कैसे explain करें? If we can take then some examples like that. Everyone, he or she wants, desire to have unlimited things. हर आदमी एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है. वो कहता है मेरे पास चीज़ें हों और बेहिसाब हो. मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट डैट कि मेरे पास एक और अच्छी गाड़ी हो, 2-3 किस्म की गाड़ियाँ हों. एक समवन वॉन्ट डैट मेरे पास और भी बेहतरीन घर हो. समवन सेज दैट मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, डिफरेंट स्टाइल के चाहिए, एक्सपेंसिव हो, मीडियम हो, जैसे भी हो. समवन इज़ इंटरेस्टेड टू टेक द फूड, और वो कहता है कि मुझे बेहतरीन आला किस्म का, लैविश किस्म का फूड हो. सो एक्चुअली द ह्यूमन वांट्स that the as much as thing he or she required उसको आप देते जाएं. Similarly अगर आप बात करें स्टेट साइड की, तो स्टेट साइड में गवर्नमेंट्स वांट्स टू प्रोड्यूस, वांट्स टू एस्टैब्लिश हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, schools, colleges. They want to develop the network, road network, और वो वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं. और कहते हैं कि जो सोचते हैं नहीं, लाइब्रेरी बन जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेजेस बन जाए, मेडिकल बन जाए, रोड नेटवर्क बेहतरीन हो जाए, हमारी बिल्डिंग्स बेहतरीन हो, हमारा इन्वायरमेंट बेहतरीन हो, वो पानी की किसी की प्रॉब्लम ना हो, पार्क्स हो, ग्राउंड्स हो. सो वी द गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड, यानी कि दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द लाइफ कि इंडिविजुअल इस तरह सोचते हैं, गवर्नमेंट साइड इस तरह सोचती है. सो बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? Everything wants money because resources are limited. ये अनलिमिटेड नहीं है कि आपकी जितनी मर्जी आए आप खाना खा लें और कौन सा भी खा लें, जितनी मर्जी आए आप गाड़ी ख़रीद लें और कोई सी भी ले लें. सो एवरीथिंग वांट्स मनी टू अवेल दिस द गुड्स एंड सर्विसेज. हमें वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसा चाहिए. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. And how can we do this? So that's the concept of understanding that what is the scarcity. So scarcity का issue है human life में, resources limited है, आपको पता है. So उसकी management का नाम economics है कि हम उसको कैसे manage करेंगे, वो with the help of the principles, theories, laws and of the economics in our daily life. So यहाँ बात करते हैं कि
how old the economics is. The economics is as old as the human civilization. जब से लोग सिविलाइज्ड हुए हैं, या आप इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि अगर हम 4000 ईयर्स बैक चले जाते हैं और हम देखते हैं, सो हमें हिस्ट्री में ये बात मिलेगी कि डिफरेंट प्रॉफिट्स, डिफरेंट एट दैट टाइम जो भी वहाँ पर रूलिंग कर रहे थे, या जो मैसेंजर्स थे गॉड के या प्रॉफिट्स थे, they were also organizing the societies, they were also developing and implying the concepts of the economics in their life. और वो जिन लोगों ने भी इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को उस टाइम पे एक शॉर्ट अंदाज में अप्लाई किया, और वो डेवलप कंट्रीज़ बनते चले गए दूसरों के मुकाबले में. अब इसको छोटा सा हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कैसे ले सकते हैं. हम सुनते हैं कि डिफरेंट प्रॉफिट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज़ डेवलप किए. मिस्र में बहुत काम हुआ, इजिप्ट में काफ़ी काम हुआ, ग्रीस, यूनान, चाइना एंड ये बिल्कुल एक क़दीमी तहज़ीबें हैं, एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं. उनके अंदर आपको नज़र आता है कि आर्यंस के बारे में कहते हैं कि ये जो थे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग थे. व्हाट आर दीज? बेसिकली वो अपने वक्त के हिसाब से, वो इट वाज नॉट एक्चुअली नेम वाज द इकनॉमिक्स वर देयर, बट टेक्निक्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स वर द सेम. और वो एक जितनी डेवलपमेंट थी उस हिसाब से वो उन्होंने अप्लाई की. जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग से ही ट्रेड का कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रेड आ गई. ट्रेड जब होने लगी तो लोगों ने डिफरेंट फेस्टिवल्स बनाना शुरू कर दिए, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होने लगे. उसके अंदर लोग ट्रेड करते थे, लोग परचेज़ करते थे. जब परचेज़ करते थे दैट्स मीन डिमांड थी तो उससे पहले प्रोडक्शन होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी. तो जिसकी एक्सपर्टी थी, कुछ जगह पे वेजिटेबल बड़ा अच्छा होता था, कुछ जगहों पे हमारा एग्रीकल्चर था तो वहाँ से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती थी दूसरी जगह पे. कुछ जगह पे हमारी जो थे वो टूल्स बन रहे थे. कुछ जगहों पे हमारे शोपीस, वुडन प्रोडक्ट्स और दूसरी डेली लाइफ की रूटीन्स की चीज़ें, क्लॉथ, ये चीज़ें बन रही थी. तो ये एक शॉर्ट टाइप किस्म की इंडस्ट्री थी. तो लोग अपने कपड़े, अपनी बनाई हुई चीज़ें, अपनी बनाई हुई हाथ की चीज़ें, घरेलू चीज़ें, और वो डिफरेंट एक दूसरे से ट्रेड करते थे. सो ट्रेड थी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट था. अगेन फिर लोगों ने अपने लिए रास्ते हमवार किए, एक दूसरे को लूटना कम किया, एक दूसरे को लिए एक आसानियाँ पैदा की ताकि इजी एंड स्मूथ ट्रेड हो सके. तो इस पर बहुत सारे हमारे पास हिस्ट्री में एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिससे पता लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, प्राइस का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट, कि किसी की एग्रीकल्चर की कैपेसिटी है, किसी की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें नज़र आता है कि द इकनॉमिक्स इज़ एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन. देन we have to have come on the recent economics because we are explaining it. So economics has started emerging as an integrated subject of the study in the 17th century. So what happened in the 17th century? Basically it developed more and more, and the one in the leading book, Wealth of Nation, written by the Adam Smith in 1776, at that time it's called the political economy. Basically again the question was that we have to manage, the resources are scarce. We know that wealth is something, we have to manage the nation's wealth. So again, in the next step, we will observe that there are different big approaches also appeared in the economics. Some economists are called they are called the classical economics, that were in the initial time, that at the time of the Adam Smith, they were called the classical economics. Then new classical economics, this is a further more extension, and then after this is called the modern economics. Sometimes it's called the Keynesian economics. So these all things are indicating is that there is an agreement that this is no single straightforward definition of the economics. Actually, classical views that this is what they understand, that this is basically the science of the wealth.
They and some others understand that there is a science of the materials, science of the welfare, and then the other observe that the science of the scarcity. So there are different concepts, but the basic is that then finally the economists agreed on that the area is that we have to have manage our resources, and we have some issues, and we have to satisfy, we have to work for the people, for the welfare of the people. So conclusively we may say that the economics की definition हम बना सकते हैं या हम literature में देखते हैं, the economics is the social science, is very clear, concerned with the way of the society and the individual. Society issues, individuals issues imply their limited resources, so it's very clear resources are limited. Everyone can have a limited resources. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बेहिसाब और हर जगह हर चीज़ मौजूद है. So limited resources which have an alternate uses to products of goods and services for present and future consumption. So what is happening? This is the precise definition of the economics, and furthermore we understand that what is the basically economics is further divided into two main branches, which are called the microeconomics and the macroeconomics. The microeconomics is the very important is that the micro shows that here we will discuss a small part of the economy, a specific area, a specific thing are there. So what are the specific things are there? That's mean if we are behaving the consumers, we are discussing about the individuals, we are discussing about a specific a small firm. So these type of the economic issues, these type of the problems will be handled in the microeconomics. तो हम कैसे उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं? Let's suppose the very common issue is the individuals are mostly affected with the prices of the product. So production of goods and services and their prices are dealt in the microeconomics. We want employment, we want to work, we want earn money, because if we will have the money we can purchase things. So employment hired by a specific firm, a small firm hiring 250 staff, 50 staff, 30 staff. So they are again from the first firm's perspective, from the factory perspective, they are producing things, they are implying their costs, they are interested to cost minimization, and they are working for what? For profit, for revenue. They want maximum revenue, maximum profit. So profit maximization issue. Individuals income and expenditure. I have an income, how can I purchase in this income? मेरी utility कैसे maximum हो, मैं कैसे इसमें एक बेहतरीन combination बनाऊँ अपनी life के लिए कि मैं अपनी लाइफ को सेटिस्फाई कर सकूँ. सो दिस इज़ माई इनकम, दिस इज़ माई एक्सपेंडिचर. सो दीज टाइप ऑफ द इशूज आर डील्ड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो नाउ this is the macro level studies, and then in the other hand we have the macro level study. Macro mean if the issues are dealing of the economy at the whole, as a whole, the whole economy matter, the greater level matter in the interest of the whole economy. अब पूरी इंटरेस्ट में क्या बात होगी? अब बात करते हैं कि let's suppose if we are observing that, so we are interested in the income, not the income of the individual, is a national income. What is our national income? हम nationally कितना earn कर रहे हैं, हमारा GDP क्या है? Basically we are interested in inflation, because inflation, that's mean everyone is affected from inflation. If there is high inflation, so the things are being more are purchasing at the high prices. तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम की बात बन रही है कि मैं हाई लेवल पे हाई कॉस्ट पे एजुकेशन परचेज़ करूँ, खाने की चीज़ें भी परचेज़ करूँ, क्लॉथ भी लूँ और अपने हाउस होल्ड सर्विसेज भी लूँ. सो मेरे लिए इन्फ्लेशन इज, तो मेरे लिए दैट्स मीन ये इट्स नॉट फॉर मी ओनली. Inflation we are discussing, so that's mean inflation of the country. And national income income is my income, this income, and the income as a whole. So employment means national employment. That's mean the overall status of the employment. What is this showing that?
money is printing by the central bank and which is circulating among the people. So कितने अमाउंट जा रही है, उससे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है. International trade, basically we are producing, someone is producing, he is producing, she is producing, basically they are producing for their income. But if they are trading it, so they are getting the more money. ट्रेडिंग कंडीशंस क्या है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम लोगों की डिमांड के मुताबिक चीज़ें बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. सो दीज आर द इशूज आर डिस्कस एट द कंट्री लेवल एज ए होल इकोनॉमी. सो दीज टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो हमने ये जाना कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्केयर रिसोर्सेज, वी आर मैनेजिंग इट फॉर व्हाट, for the production of goods and services, and for the consumption, present consumption and the future consumption. And there are basic classification is that the microeconomics and the macroeconomics, and we will discuss that the different examples. In the last I will take the 2 minutes, and then I want to discuss the important concepts of the economy. In literature we have 3 main economies. Actually these are the states, the conditions of the economy. The number 1 is the capital economy, social economy and the mixed economy. Actually as a student of the economics, we have to have known that what type of the economy existing in our country and in the world. So very simple definition of the capital economy, basically it is the capital economy, so that's mean there is the almost zero influence of the government. A free competition is a free economy, and this is a highly competitive economy. और इसके अंदर आपके पास आपने प्राइवेट वर्किंग को फुल इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाएं, मार्केट के बेसिस के ऊपर प्राइसेस तय हों, और जो है वो चीज़ें जो इससे ये है कि एफिशिएंसी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्शन में इनोवेशंस आती हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है. एंड सेकंड थिंग ये कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बग़ैर काम करे अर्न कर सकता है. कोशिश होती है कि आप नहीं अर्न करेंगे आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे आप मार्केट से आउट हो जाएंगे. सो दिस आर द कॉन्सेप्ट, इसके अंदर डेवलपमेंट है. बट there's a one and important aspect which is very dangerous, which is very dismerit of this economy, is that कि यहाँ पर हाई इनइक्वालिटीज़ के चांसेस होते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके अपने स्टेटस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर डिटेरिएट हो रहे हैं, डिप्राइव हो रहे हैं, तो वो डिप्राइव ही होते चले जाएंगे. यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग के इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है. ऑल्दो अब डेवलपमेंट होती है, इकॉनमी में एफिशिएंसी आती है, लेकिन ये चीज़ें इसके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स की जगह मौजूद है. ऑन द अदर हैंड दिस इज सोशल इकॉनमी, और सोशल इज टोटली गवर्नमेंट कमांड इकॉनमी. गवर्नमेंट कमांड इकॉनमी के अंदर आपको इजाज़त नहीं है कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे. एक्चुअली वी विल डिसाइड इन द नेशनल इंटरेस्ट. So when we will decide the national interest, so mostly companies, banks, firms are by the state owned, and everyone is working for the state, and वो फिर prices decide करते हैं, market decide नहीं करती, वही फिर production की quantity decide करते हैं. फिर वो the basic concept is that basically we understand all are equal and we are trying to distribute the national income equally. सो ये कॉन्सेप्ट अट्रैक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमें बहुत सारी कैपिटल इकॉनमी तो मिलती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमीज तो मिलती हैं, लेकिन सोशल इकॉनमी जो है ना वो बहुत कम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया, रशिया में किया गया, लेकिन वो भी कोई भी परफेक्ट कैपिटल इकॉनमी नहीं मिली. इस तरह परफेक्ट सोशल इकॉनमी भी कोई नहीं है, परफेक्ट कैपिटल इकॉनमी भी नहीं है, परफेक्ट सोशल इकॉनमी भी नहीं है. हाँ, जैसे अमेरिका नियरेस्ट टू द कैपिटल इकॉनमी है, रशिया ने सोशल इकॉनमी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर लगाया है, लेकिन वो भी अब डाइवर्ट हुआ है मिक्स इकॉनमी की तरफ. सो द थिंग इज़ दैट इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि जब स्टेट इज़ डिसाइडिंग तो इनोवेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन.
और हर चीज़ हमें दस्तियाब ज़रूरी नहीं हो, बिकॉज कि 5% लोग अगर किसी डेवलपमेंट चीज़ को चाहते हैं किसी को, तो 95% लोग नहीं चाहते, तो स्टेट उस पर क्यों काम करेगी। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग, टेक्नोलॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर इश्यूज हमें ऑब्जर्व हुए हैं। ऑल द वेलफेयर की बात है, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात अच्छी करते हैं। सो our economy has there some merits and demerits. Mostly countries are applying the mixed economy, which is a combination of the both. So mixed economy में basically आपने अपने प्रोड्यूसर को फ्री किया हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना रहा है, मार्केट प्राइसेस डिसाइड कर रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरवीनिंग बट दे कैन इंटरवीन, दे हैव राइट टू इंटरवीन, एंड दे इफ द प्राइस आर नॉट कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा वेलफेयर गवर्नमेंट पब्लिक की गिर रही हो, तो वो आके बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं और सब्सिडी दे सकते हैं, या प्राइसेस को नीचे कर सकते हैं, या जो भी एविल एलिमेंट्स हैं उनको वो ख़त्म कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली the important concept of the different types of the economies. So I hope that this is a lecture on the what is economics, and if someone has confusion, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, तो आप हमारे एड्रेसेस यहाँ पे मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ मौजूद है, आप एनी टाइम यू कैन आस्क अबाउट सम क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.